3, 2. Hi, everyone. Thank you so much for joining. We'll just wait for 2 or 3 minutes to make sure that everyone is with us before starting. Thank you so much for joining, everyone. Again, we'll maybe wait another minute before starting, just to make sure that we're all joined in before the session begins. Okay, great. Thank you, everyone, for your patience. Good afternoon, and welcome back to COVID Academy, which is a series of sessions and webinars hosted by the Young Warrior Campaign to combat misinformation related to COVID-19. Through these interactive sessions, we hope to address your doubts and concerns so that you can secure yourself, your family, your community, and ultimately the country against this pandemic. If you would like to join our campaign, text YWA to +91 96 504 14141 or send a missed call to 080 660 19225. These instructions will also be shared in the comment section, so just have a look out for that. Today's session is hosted in partnership with Dr. Jayanti Singh and will focus on home management of COVID-19. In today's session, we'll be covering eligibility and prerequisites for home management, nutritional advice and sanitization, instructions for the caregiver on checking BP and using the oximeter, when to seek medical attention, when to discontinue home isolation as well. Throughout the session, please don't hesitate to ask your questions, share comments, and feedback. They'll be answered after the presentation, but we'll try to make sure that they're all answered. And now I'll introduce the expert for today's session, Dr. Jayanti Singh. Dr. Jayanti is a public health and epidemiology specialist with over 15 years of experience in public health and vaccine preventable diseases. She's worked with UNICEF and WHO on polio eradication campaigns and is currently associated with Exemplar and Global Health through Gates Ventures, which is looking at best practices in public health and scaling them. Handing it over to you, Dr. Jayanti. Okay. Good afternoon, and I think it is my privilege to be a part of this initiative from UNICEF. So before I begin with my presentation, the one thing which I would like to stress that most of the people with corona infection, they recover without hospital management. So yes, we need to be cautious. We need to practice safe distancing, social distancing, but at the same time, panic should not be so high. Most of the cases, we wouldn't even come to know they are asymptomatic, no symptoms. For some, we do require a little bit of medical help. So let's face this COVID with
safe practices, and sooner we'll be able to defeat it. With vaccine also coming in, this scenario would change very soon. And with this saying, I would like to share some slides with you. So if we can, if it's okay, I would like to share those PPT with during this presentation. I welcome all the questions, and we would take them at the end of the presentation. And so I begin with this COVID management at home. So just remember, more than 80% of the corona positive cases recover easily at home. So we do not need to panic. If you or someone else in the house tests positive, they would be fine in 2 weeks' time. So more than 80% of the cases, as we've said, are asymptomatic or have mild symptoms. Such patients can recover in the comfort of their own homes. And that's what we're going to deal today. So one thing now we're saying we're in the second wave. So the first wave, we were looking, most of the major symptoms used to be fever, persistent cough, loss of smell and taste. But for this second wave, we have additional symptoms which we should look out for. That would be aches and pains, diarrhea, discoloration of your fingers and toes, sore throat, very irritating throat, conjunctivitis, or we say as pink eye, headaches, and skin rashes. So now let's see who can be for home isolation. Asymptomatic patients, that means they've tested positive, but they have no symptoms. There would be close contacts of a positive patient who are eligible for home isolation, or anybody who's exposed to the infectious secretions of a positive patient, or a person who's been in the same closed environment with a positive patient, face to face and about less than a meter's distance. So all these people are eligible for home isolation. Then next step, there's some people who do have mild symptoms. They do not have very high fever. They have what we medically call the saturation is fine, the lung, that which represents that the lung functions are fine. So they are also eligible for home self-management. It's only when the patient develops symptoms clinically or radiologically of symptoms of pneumonia, or the saturation goes down to below 95, then we need to think about hospitalization. And there are different categories of beds or the hospital care we need. Not everybody needs intensive care. Some people can be just in COVID care facilities. Some may require facility with oxygen. And very, very extremely few people would require a more high dependency unit. Okay, then comes severe cases. Severe cases, yes, we do need an ICU or a high dependency unit, but this is very rare. So we would be talking about the first two sections. So now we say most of the people can be home isolated, but there are few categories we should be getting medically evaluated before we decide to go for home isolation. And those would be elderly people, patients with comorbidity like hypertension, diabetes, heart diseases, chronic liver, lung, or kidney diseases, or cerebrovascular diseases. Otherwise, the patients who are immunocompromised, maybe because they had some transplant, they are on cancer chemotherapies, or HIV patients. So these patients also need to be fully evaluated by a medical officer before we decide for home isolation. So now, what do we need in our houses for it to be a safe place for isolation of the patient, as well as not be the threat for the other households? So the house should have a separate ventilated room and a separate toilet.
So it's equally mandatory to have a separate room with the toilet. We should not be sharing toilets with other people in the house. Then we should have a requisite facility at the residence for self-isolation and quarantining of the family contact. Now, an example I would like to give here, like supposing you have a place where you can quarantine a room and a toilet, but somehow a family member of your house cannot, all the other members of the house cannot stay home for that duration. That means quarantining of the contacts is not possible, maybe because of occupational reasons or whatever reasons they have to go out. Then we should not be doing home isolation. Then we should have a caregiver, somebody to take care of you 24/7. Staying alone is not an ideal situation for home isolation. Followed by it, there should be a communication link between the caregiver and the hospital. That means your caregiver should be a person who is capable of being in touch with a doctor or other health worker or with the hospital, so that in case of emergency it does come up, the person can help movement of the patient from the house to the facility. Ideally, it's said that if anybody in the house is elderly, or we have a pregnant person in the house, or another household which person who has cancer or severe asthma, other respiratory diseases, cardiovascular diseases, hypertensive or renal diseases, ideally we should shift those people to a different location so that the presence of a COVID patient is not a threat to them. It is for their health, for their benefit, that we do not want them in the same house. So now we come to instructions to the patient in home isolation. So you see, most of the patients do not require much support. They can carry on with their day-to-day activities. They are mobile enough to go to the toilet, do their basic taking care, eat themselves, make themselves comfortable in the house. So we have certain instructions which we give it to them. And one of them is that they should have this Arogya Setu app on their mobile smartphones, and the notification and location services should be on all the time. This is also to do because the government officials do contact these people to know their health status. Generally, you get a once in a day call from the health facility, any health facility in your district. That's why you need this app to be on. Then patients should always wear triple layer medical mask. It is advised that you should use those masks instead of those cloth masks, if not possible, but otherwise this medical mask free layer is advised. So once you wear them, these are disposable masks, so they need to be changed. And so because during COVID you have cough, you have secretions, so when you feel they are wet or soiled, you need to change them. Otherwise, you need to change them every 8 hours. And if somebody is coming into your room for some reason or the other, first of all, avoid it. But if somebody is coming, switch over to N95 mask. This is for the protection of your caregiver. Then how do we discard these masks? So for discarding, you should disinfect them with 1% sodium hypochlorite. That is the bleach solution. If nothing else, just a plain bleach solution. And discard them in a dustbin which has a lid. It is advised, strongly advised, that all the windows of the room should be open so that we have a good ventilation in the room. If the flow of air in the room is well ventilated, it helps in reducing the viral load in your room. Then, next thing, even if you're staying in the same house, please stay inside your room in the entire duration. It's not advised that you go to common areas, go out of your room. Please don't do that. It exposes the other people in your house. Next thing, your personal items should not be shared. These include mobile phones. Of course, I don't think so people would be sharing toothbrushes and razors and things, but as far as whatever are your personal items, please
Do not share with anybody in the house. Then you should have a toilet which is designated for you, and please use that only. One thing you need to remember that after using the toilet, please close the lid before flushing. Flushing leads to a lot of aerosol, which leads to spread of virus. So ensure that you close the lid and then flush the toilet. Since it's a viral disease, it is taking toll on your body. So take rest. Use this time to recuperate. We've been running around the whole time in our lives. So this is the time to take rest and have a lot of fluids, because you need to maintain proper hydration. So rest and drink a lot of fluids. Then, even if you're staying in an isolated room, you need to practice respiratory etiquette. That means you need to cough and sneeze with something which covers your face and your mouth, of course the mask. Then if you have to cough or you're not comfortable, sometimes use your elbow like this to cough or sneeze. Frequent hand washing. Hand hygiene is must. You need to wash your hands for 40 seconds with soap and water. Otherwise, alcohol-based sanitizers also you can use in between. If you are healthy enough, or if you think you are strong enough, please clean all the surfaces of your room with 1% hypochlorite solution. That means your doorknobs, your hands, if you're looking at laptops for a long time, just wipe them with hypochlorite solution. It just reduces the viral load in your room. Strictly follow the medication prescribed by the doctor. Here I must stress, do not self-medicate. Whatever is prescribed by your attending physician, stick to that. If you are somebody who's had earlier problems like cardiovascular disease or any other problems with the hormones, or you're pregnant or breastfeeding, please consult your cardiologist, endocrinologist, or your gynae or OBG person, and they would be advising you any extra medication if required, or how you would continue with your pre-existing medication. So we need to be in constant touch with our doctors who have been prescribing us medicine before the COVID infection. It may happen that your parameters change. Then those consulting endocrinologist or your cardiologist, they would titrate the dose. So to do that, we also need to measure our BP twice a day if we've been hypotensive earlier. Or if we are diabetic, we need to take our fasting sugar, PP sugar. Sometimes during COVID infection, the sugar levels fluctuate. So your endocrinologist or your person who you're attending physician may want to titrate your insulin or your glycemic drugs. So monitor these also. And avoid alcohol and quit smoking. Dr. Jayanti, we'll just switch the interpreters. Yes. Go ahead, please. Okay. So further with the instructions, like we are to do certain self-monitoring. So self-monitoring of blood oxygen saturation with the pulse, the temperatures, and the respiratory rate we need to do. The present guidelines sometimes even suggest that you really don't need the saturation levels to be done. Just simple temperature with a thermometer and your pulse rate or respiratory rate is enough. But if you do have a pulse oximeter, you can use and record your oxygen saturation. You can feel your pulse for 30 seconds over your wrist and record it. You can similarly watch out for number of breaths you take in a minute, which is your respiratory rate. Do this 6 hourly. Okay. So taking it that most of the patients would not be so sick that they would require hospitalization, but still watch out of the following symptoms, which may be alerting us to take further medical care, and that would be difficulty in breathing, persistent pain or pressure in the
chest, mental confusion, or developing bluish discoloration of lips or face. Just watch out of these symptoms. Mostly it doesn't happen, but we should be mindful of it. Now, there are a number of tests which people go on for, even if they do not have much severe symptoms or even moderate symptoms. So like chest CT, high resolution chest CT, or D-dimer test, C-reactive protein. Don't routinely need them. Do them only once you have any alarming symptoms coming up. Because whenever you're going to go for HRCT, you're exposing to radioactive waves, which may not be required. So any unnecessary investigations without the advice of your consulting physician is not very advisable. So I just want to take you through how to use an oximeter. So it's a small equipment around 2-3 inches size. So what you do with it, it's shown in the diagram. You switch it on and you put it in your finger. Generally, they use it in your index finger. You need to put it in a way that the screen is on facing you. You can see the screen there. Once you put the screen there, give it a pause for 5 to 10 seconds. It will read your saturation level and as well as give you your pulse rate. So generally saturations level around 99, around 95, they are pretty okay. You don't have to worry. But if it goes down, you may want to consult a physician, even if it is hovering around 95, 94. You can ask any consulting physician that what should I do next? Now, another thing which they say that once you do a pulse oximeter, they sometimes advise you to put the to walk for 3 or 6 minutes and then take your pulse. So if you walk and take your pulse reading, your pulse oximeter, there may be a change of reading, but how much is the change will also determine whether you are very safe at home or you may want to take further consultations. Now, some things which you need to be aware, let's say it's taking the reading from your nail. It's best that you should not have a tattoo or a nail paint or a henna in your finger which you're using it. And for pulse oximeters, we do not recommend really to have a separate one for everybody in the house. So this can be shared in the house, but it needs to be disinfected. So the best way to do is that you wipe your finger before using it. Once you've used it, taken the reading and recorded the reading, please clean the pulse oximeter before sharing it with anybody else in the house. Ideally, it is said that what is in the isolation room with the patient should not go out of the room. But pulse oximeters and all, they're slightly costly for many households. So you may have a situation where you're sharing it with anybody. So please take care that you clean your finger before using it. And after you've used it, clean it before you share it with somebody else. Now we talk about temperature recording, which is must for everybody and across all the states in the country. So we take oral temperature 6 hourly. This temperature thermometer which you use to take oral temperatures should not be shared with anybody. Okay. We must remember that before taking the temperature, at least 10 minutes before it, we should not be drinking, we should not have taken any food or drinking or have done the gargles or smoking. It would lead to change in the temperatures. And any temperature over 100 degree Fahrenheit, 37.8 is considered higher. At this stage, if it persists for more than 3 days, you need to take an advice of a consulting physician, whoever you've been in touch with. Some people use thermal guns. So thermal gun, you really don't, it's contactless. So you put it at a distance of 6 inches from your forehead and you take the temperature. Once you've taken the temperature, and if you still need to use it with other households in the house,
please clean it with alcohol-based sanitizer and then hand it over to your family contacts. Now, nutritional advice. Lot of fluids, 3 to 4 liters of fluid to maintain adequate hydration. We need to have proper hydration of our body for it to recover sooner. Drink fluids like juice. You can take tea twice in a day, soup, ORS, nimbu pani, which is very local to us, coconut water. You can take all these things. Just be mindful that people who are diabetic may need to see the amount of sugar they are taking. So speak to your your endocrinologist or your diabetic physician, and he or she would advise you accordingly. Food which we eat should be low in carbohydrates. Let's avoid this junk foods, even if you want to. Our food should be high in protein and should have adequate vegetables and fruits in our diet. So sometimes just an arbitrary figure, I would say that 2 eggs a day, or maybe some kind of chicken you can have once in a day for all the duration of your illness. So there's no embargo on reducing your intake of proteins. Yes, do avoid very spicy and very fried food, but otherwise high protein meals are advised. Take a lot of fruits. They are rich in micronutrients as well as fibers. There's something which I would like to, we have a video also for your benefit, which would be shared along with this presentation later on. And there are certain positions which you need to practice while you're resting, and that is called prone positions. So now what we do, we try that the person sleeps or lies down, belly down. Then you shift to one side. Then you sit up. If the person can sit up, then you lie down straight for a while. Then you turn to the other side. Then back again on your belly. So you keep rotating like this every 30 minutes to 2 hours. Depends what you're comfortable at, and also depends how healthy are you or how strong you feel to do these position changes or yourself. Some people may require assistance here, so then they would be using the help of their caregivers. So now we go to the next section, that is who can be caregivers or the attendants. Mostly, since we do not need specialized medical care, it would be our family members. But those who we keep close to us, they should have good physical health, ideally younger age group, 24 to 50 years, should not be having comorbidities like diabetes, hypertension, heart disease, asthma, or any other COPDs, because these are the comorbidities which can lead to severe diseases. So we do not want our attendants or our caregivers who may be having these pre-existing medical conditions. Should not be immunocompromised, should not be pregnant, should not be suffering from cancer or just on chemotherapy, liver diseases, etc. And these caregivers should also have Arogya Setu app on their mobiles with location and tracking services on all the time. So now, instructions for the caregivers, especially mask. They also need to wear triple layer mask all the time. But when they go inside the room of the patient, they need to use N95 mask. They should not be touching the front portion of the mask. Change immediately if the mask is wet or dirty. Discard the mask after use and disinfect the mask with the hypochlorite solution before disposing it off in a closed bin. Same advice which we gave to the patient. Here also the attendants also need to follow the same. We should avoid touching our own face, nose, and mouth, because this is where the virus easily gets inside the body. So avoid doing that. Hand hygiene. As with the patient,
Same for the caregivers. Hand hygiene is a must. If we practice hand hygiene, we still can break the chain of transmission. So, hand hygiene must be ensured for following the contact with the person or his environment. That is, if you go to his room, maybe knocked on his door to open it. Whenever you are in the patient's environment, you should follow hand hygiene once you're out. Hand hygiene should be practiced before and after preparation of food, before eating, before using toilet, before and after wearing gloves, and whenever the hand looks dirty. Use soap and water for hand washing for 40 seconds. And sometimes you can also use alcohol-based hand rub if the hands are not visibly dirty. Use disposable paper towels to dry your hands after washing and discard them in a bin. For some reason, if you do not have these paper towels available all the time, you can use another towel, cloth towel. And whenever it gets wet, please change it. We'll just switch the interpreter, Dr. Jayanti. Yes. Let's go ahead. So avoid direct contact with body fluids of the patient. They are very infectious. So avoid that. Use mask, disposable glove, and plastic aprons before you go to handle or support the patient. So of the disposable gloves, you can dispose, mask you clean, you disinfect with hypochlorite, and then you dispose. But the plastic aprons, which maybe it works like a homemade PPE, if we do not have PPE kits all the time, this plastic apron can be cleaned with hypochlorite solution and can be reused. But it needs to be cleaned very properly before you take it out for the rest of the households to be safe. Avoid exposure to the potentially contaminated items in the immediate environment of the patient. And as advised to the patient, same advice to the caregivers. Avoid sharing personal things like cigarettes, mobiles. Utensils can be reused in the house, but do not eat in the same utensil at the same time. Clean the utensils before you reuse it. The linens, the towels of the patient should be washed separately from the rest of the house and dried in sunlight if possible, otherwise in a ventilated area. Food, ideally, we should not be going inside the patient's room to get. We can always leave the food outside his room and the patient can take if the patient is mobile enough. Utensils and other dishes, the patient can keep outside the door. It can be picked up and washed with soap and detergent and can be reused again. Try wearing a mask when you are picking up the utensils and cleaning them. Sorry, not the mask, the gloves before you're picking up the utensils and cleaning them. Cleaning of hands after taking off the gloves or handling the used items. So you are always wearing triple layer mask when you are touching any utensil or linens or anything which the patient has used. You wear gloves when you're touching these things. Once this show is over, you take off the gloves, dispose them, and wash your hands with soap and water for 40 seconds. Clean and disinfect patient's room if the patient cannot do himself, and the bathroom and the toilet with the regular stuff which you use in the house, whatever Lysol, whatever you're using, clean it first with that. After cleaning with that, you use 1% hypochlorite solution and complete the disinfectation of the toilet and the rooms. So it's two-way process. Use your regular things for cleaning first, followed by 1% hypochlorite solution. And of course, like patients, the caregivers also need to monitor their health. So all caregivers and the contacts in the house, they need to self-monitor for daily temperature and as well as for oxygen saturation.
Even if you're not measuring oxygen saturation, daily temperature recording and respiratory rate should be measured and recorded. If you're on any medication beforehand, please continue your medication. If anything else is advised by the doctor, maybe like multivitamin or like vitamins or something which are advised by the doctor, do take them. And last, since you're taking care of the patient and you are quarantined inside the house, sometimes for your daily needs, you may have to request your relatives, friends, and neighbors to drop things in front of your door. Don't hesitate. We all are there to support each other. Just be mindful that they drop things outside the house and do not enter your home. You can also use online facilities. You can order things online. Ensure that you have some table or something where the commodities or the things which you've ordered are kept there and the patient delivering them is safe and goes back. Now comes that ideally things don't go wrong and everybody recovers and gets healthy very soon. But there may be incidences where we need to seek medical attention. So immediate medical attention must be sought if serious signs and symptoms, like mentioned below. So if the person starts having difficulty in breathing, it's a trigger sign. You need to contact a medical professional. Oxygen saturation dips below. Sometimes in a patient who has pre-existing respiratory illnesses, their overall saturation is slightly lower than us. So for them, it's a different reading, but that's always, those persons are always in connect with their treating physician. So he or she will advise. Persistent chest pain. Some people feel chest pain, some people feel tightness, extreme tightness, or heavy weight on their chest. You need to consult a doctor there. Severe persistent cough. There would be cough, it would be irritating, but when it turns towards worst side, when it goes turning south, then you need to speak to a medical professional. Loose motions more than 4 times a day. Fever over 101 degree for the last 3 to 4 days. And if you think the person is developing mental confusion or appears to you a little disoriented, then please seek medical consultation. Now, good part. When do you discontinue? So here, there are differences in guidelines from state to state. But generally it is taken that once the fever is from the onset of symptoms, 17 days with no fever for the past 10 days is the time when you finish your home isolation. It's not recommended that you need to be tested after your period of isolation is over. You're healthy and the virus is not impacting your body and you are not transmitting. So why go for unnecessary testing after your isolation period is over and you are not having fever, you're feeling better? So we can end it by after 17 days from the onset of symptoms. There may be certain changes from state to state. So this is followed in Delhi. So that's all from my side. Thank you for your patience in listening. Stay home and stay safe. If there are questions, I would like to take them now. Great. Thank you so much, Dr. Jayanti, for that detailed presentation. There are some questions और ये काफी सवाल हिंदी में भी हैं, तो अगर हो सके प्लीज हिंदी में आंसर करिएगा. Thank you very much again. पहला सवाल है जो ध्यान रखता है केयर टेकर, वो खुद का बर्नआउट कैसे अवॉइड कर सकता है, मतलब खुद का मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रख सकता है इस समय के दौरान. ओके, सो जो केयर गिवर होता है जनरली हम उसको भी यही बताते हैं कि ठीक है इन्फेक्शन पॉजिटिव हो गया आपका कोई लव्ड वन, बट जरूरी नहीं है कि ये बीमारी बढ़े. और जब ये डर कम होता है और ये केयर गिवर भी समझता है तो उसको शायद थोड़ी एंजाइटी कम होती है.
एक तो ये तरीका है कि हम उसको मेडिकली समझा सकें कि यस, ये बीमारी हमेशा बहुत नेगेटिव टर्न नहीं लेती। सेकंड, कभी कभी जो हमारे घर में पेशेंट होते हैं उनकी हमें देखभाल करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। टाइम टू टाइम खाना देना, स्पेशल डाइट अगर हम दे रहे हैं, टाइम से फ्रूट देना, ये सब करते करते प्लस घर का और काम करते करते आप थकने लगते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ये थक रहे हो, तो थोड़ी सी कोशिश करिएगा कि अपना रूटीन किसी भी तरह से करके, मे बी कुकिंग टाइम आप रिड्यूस करके या एक टाइम ज्यादा बना करके वो काम थोड़ा कम कर सके। अगर आपके घर में कोई और भी है जो आपका कुछ लोड बाकी के घर का काम का ले सकता है और आप सिर्फ पेशेंट की केयर में रह रहे हो, वो भी आपको हेल्प करेगा। आप कम थकोगे, आप आराम करोगे जितना कर सकते हो, तो आपको थोड़ा बेटर लगेगा। एंड एक चीज हम एडवाइस ये भी करते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ने से या बहुत ज्यादा मीडिया फीड्स, इन सब कोविड के बारे में जो भी आती हैं वो बहुत नेगेटिव होती हैं, उन्हें थोड़ा सा अवॉइड करो। आप पॉजिटिव थिंकिंग रखो कि हमारा पेशेंट ठीक रहेगा। अपने आप का वर्कलोड कुछ अगर आप मैनेज कर सकते हो किसी और के साथ घर में शेयर करके, एंड आप सिर्फ पेशेंट का ध्यान रखो, अपना थोड़ा आराम करने का डेडिकेटेड टाइम निकाल सके, आपको ठीक लगेगा। अगर आप योगा करते हो तो आप उसको प्रैक्टिस करो। कोशिश करिए थोड़ा आप एंटरटेनिंग चीजें, अगर आप टीवी या जिसमें भी नेटफ्लिक्स या जिस जिस मीडिया में भी हो आप देखते हो, थोड़ा सा लाइटर थिंग्स देखने की कोशिश करिएगा। the happier you are, और the more जितना आपके अंदर कम पैनिक होगा या एंशियसनेस कम होगी, आपको उतना ही बेटर लगेगा। आप ये भी कर सकते हो कि देयर आर सम हेल्पलाइंस जो गवर्नमेंट ने भी बनाई हैं, जहाँ पे आप कॉल करके अपनी मन के डर की बातें उनसे कर सकते हो, वो भी आपको एडवाइस कर सकते हैं, और ये सबसे होपफुली आपको ठीक लगेगा। थैंक यू डॉक्टर जयंती। काफी विस्तार से आपने समझाया कि क्या क्या कर सकते हैं केयर गिवर्स। कुछ और सवाल आए हैं, जिनमें से है कि आप कुछ सजेशन दे सकती हैं कि कैसा खाना बना सकते हैं, क्या खाना में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, अगर हम वेजिटेरियन है तो क्या हाई प्रोटीन सोर्सेज हैं। ओके, तो खाने में एक चीज ध्यान रखिएगा कि तला भुना नहीं ज्यादा। ऐसा नहीं करिएगा कि हम बहुत पराठा बेस्ड डाइट या पूरी कचौड़ी दे। एक आध बार अगर पेशेंट का बहुत मन किया, कभी कभी होता है ऐसे पेशेंट्स को, आप दे सकते हैं, बट जनरली डाइट पेशेंट्स की कम हो जाती है और उन्हें बहुत अच्छा टेस्ट भी नहीं लगता। तो आप अपनी तरफ से मसाला, तेल अवॉइड करिएगा ना। दूसरी चीज आती है कि हम प्रोटीन कैसे बढ़ा सकते हैं। सो नॉन वेजिटेरियन इट इज स्लाइटली इजी, आप अंडा दे सकते हो, आप चिकन खा सकते हो। रेड मीट थोड़ा सा वैसे अवॉइड करना चाहिए, इट्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। बट अब आते हैं वेजिटेरियंस। सो हम दूध ले सकते हैं, हम दही ले सकते हैं, हम पनीर ले सकते हैं, हम सोया ले सकते हैं। सोया बड़ी आती है न्यूट्रीनिगेट्स टाइप की, हम उनको ले सकते हैं। हम दाल अपनी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टोफू खाते हो या आप नहीं भी खाते हो, तो आप पनीर की जो इनटेक है उसको आप थोड़ा बढ़ा लीजिए। एंड पनीर, मिल्क बेस्ड प्रोटीन एंड दाल की प्रोटीन की मिक्स करके डाइट बनाइए ताकि कंप्लीट प्रोटीन जाए आपके पास। एट द सेम टाइम हमें और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो हम फल हमें खाना चाहिए। एटलीस्ट 2 to 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एक दिन में जरूर लेना चाहिए। अब हम ये नहीं कह रहे कि पेशेंट बिल्कुल ही नहीं खा पा रहा है, उसकी भूख बहुत कम हो गई है, तो भी हम उसको बहुत परेशान करें कि आप खाओ ही। बट हम उसको एनकरेज कर सकते हैं फाइबर खाने के लिए।
कभी कभी हम ये भी कर सकते हैं, जैसे वेजिटेबल्स होती है ना, सिंपल बीन्स, गोभी, भिंडी, कैरेट अगर मिल जाए, खीरा, तो खीरा को छोड़ के बाकी को आप स्टीम करके, अगर स्टीमर है तो, नहीं तो सिर्फ उबलते पानी में उनको डाल के ढक दीजिए 2-3 मिनट के लिए। उनको फिर निकाल करके वो सॉफ्ट हो जाए, वो आप पेशेंट को खिला सकते हो। तो इससे फाइबर भी चला जाएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी चले जाएंगे, और फैट कम रहेगा, बिकॉज हमने कहीं तेल वेल में कुछ बनाया ही नहीं है। तो हम इन सब तरीके से करके डाइट पेशेंट की मैनेज कर सकते हैं। एक चीज ये याद रखिएगा कि हम ये कहीं नहीं प्रमोट कर रहे कि हम बहुत महंगे फ्रूट्स खरीदें, उसकी जरूरत नहीं है। जो नॉर्मली अवेलेबल है, केला, आजकल आम, पपीता, तरबूज, मस्कमेलन, खरबूजे, ये सब आप खा सकते हो और आप उन पेशेंट को खिला सकते हो। सो आप डाइट भी कंप्लीट रखोगे, ज्यादा परेशान भी नहीं आप होगे। ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं। Thank you, एंड Dr. Jen. No, please finish, please. आपको, आप जब आप पॉजिटिव होते हो तो आपको मल्टीविटामिन्स लेने को भी कहा जाता है, वो आप जरूर लीजिएगा। मल्टीविटामिन्स एंड जिंक, ये आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा, ये आप एज पर प्रिस्क्रिप्शन जरूर लीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर जयंती। तो बहुत सारे फल खाने हैं, कम तेल और कम मसाला का खाना, जितना हो सके सब्जी खाएं, और पनीर, दही, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, चिकन, अंडे के जैसा खाना खाएं। और वो मल्टीविटामिन की गोली और जिंक जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो भी जरूर लें। some other questions. कोरोना के से उभरने के बाद बहुत ज्यादा कमजोरी लगती है, तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? वेरी गुड। देखा जा रहा है कि अभी सेकेंड वेव में जो कोरोना के पेशेंट्स हो रहे हैं, ये रिकवर तो हो जा रहे हैं, बट उसके बाद परसिस्टेंट वीकनेस रहती है। Have we switched? Yes. Yes, go ahead. So persistent weakness रहती है for about a month, 1 महीने तक की persistent weakness रहती है बहुत से पेशेंट्स में। So इस टाइम में आपको 2 चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट, यू अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अभी आपको वीकनेस है, वो बहुतों को होती है, नॉर्मल है। तो आप बहुत एग्रेसिवली अपने डेली रूटीन के काम में ना जाएं, जितना हो सके आराम करें, अपनी बॉडी की सुने। सेकंड, आप अपनी डाइट मेंटेन करें। भूख कम लगेगी, जिस समय आपको वीकनेस लगती है उस समय भूख भी थोड़ी कम रहती है। कोशिश करें आप सही खाना खाएं। आप प्रोटीन्स अभी भी कंटिन्यू करेंगे ज्यादा लेने की, फाइबर्स अभी भी कंटिन्यू करेंगे ज्यादा लेने का, एंड मल्टीविटामिन्स आप कंटिन्यू रखेंगे। सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप अपनी बॉडी की सुनिए, आपको भी आराम की और जरूरत है, उसे दीजिए आराम, और उसको एक कंप्लीट मील भी दीजिए। एंड ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप ठीक हो जाएंगे। 1 महीने के अंदर आपकी एनर्जी लेवल वापस आ जाएगी। जनरली इससे पहले आ जाती है, बट कुछ लोगों को 1 महीना तक भी लग जाता है। थैंक यू डॉक्टर जयंती। सो अपने बॉडी का मतलब सुनिए कि अगर वो थकान महसूस हो रही है तो रेस्ट करिए, जितना न्यूट्रिशन दे सकते हैं उतना न्यूट्रिशन दीजिए, और बस इंतजार करिए। आप धीरे धीरे रिकवर हो पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के ऊपर है। होम आइसोलेशन में आपने पहले बोला था योगा भी कर सकते हैं, किस प्रकार का योगा कर सकते हैं? एक तो अगर हम कोविड पेशेंट हैं, एंड ऑल्सो अगर हम केयर टेकर हैं, एंड और क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? सॉरी। सो कोविड पेशेंट्स को बहुत रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। पहली चीज, दे नीड टू बी रेस्टिंग। अब रही बात, कुछ लोग योगा अच्छी तरह से जानते हैं, तो उसमें भी एडवाइस ये किया जाता है कि आप लाइट योगा पे रहें,
एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज वाले जो योगाज हैं, अलोम विलोम, ये सारी चीजें उन्हें प्रैक्टिस करें. बट एट नो पॉइंट यू शुड बी डूइंग हेवी कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस या बहुत टिपिकली डिफिकल्ट योगा मत अवॉइड करिए. ट्राई यूज उस समय योगा वो रखें जो ब्रीदिंग के लिए हेल्प करे या जो आपको मन को शांत रखने में, लाइक मेडिटेशन, उसको करें. अब केयर गिवर्स कैन ऑल्सो फॉलो द सेम थिंग्स. अगर केयर गिवर के पास सपोर्ट सिस्टम है और वो टाइम निकाल सकता है अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए विद इन दी हाउस, बाहर नहीं, तो वो करें. बट समटाइम्स इट इज एग्जॉस्टिंग टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट, तो उस समय बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज नहीं एडवाइस करते, बिकॉज वो भी तो आपकी बॉडी को ही स्ट्रेन करता है. ग्रेट, थैंक यू डॉक्टर जयंती. तो ज्यादा स्ट्रेन वाला एक्सरसाइज मत करिए, जो आसानी से होता है दोनों कोविड पेशेंट और केयर टेकर के लिए, वही करिए. अनुलोम विलोम जैसे एक्सरसाइजेस. some other questions, there's a request, आप फिर से समझा सकती हैं हिंदी में ऑक्सीमीटर कैसे इस्तेमाल करते हैं? हाँ, एक जस्ट होल्ड अ सेकेंड. हाँ ठीक है. So I have an oximeter here. Oximeter ये है. मैंने भी इसमें सेल नहीं डाला है, तो मैं डाल के आपको बताती हूँ. ये भी जरूरी है सेल खरीद. Yes. So सेल डालने के बाद ये ऑन हो गया. इसके बाद इसको ऐसे दबाओ और अपनी मिडिल फिंगर इसमें डाल दीजिए. मेरे हाथ में कोई नेल पेंट या टैटू या कुछ वैसे भी नहीं लगा है. इसको डाला मैंने, फिंगर को ऐसे रखा, थोड़ी इट टेक सम टाइम, और उस समय ऑक्सीजन का ये दिखाने लगता है. जैसे मेरी, आई थिंक ये रिवर्स आ रहा है, अभी मेरी 98% सैचुरेशन है और मेरी पल्स रेट जो दिखा रहा है 90 है. ऐसी ही रीडिंग आपके पास भी आएगी. उसमें लिखा आता है परसेंटेज SPO, वो लिखा आता है, तो आप उसके ऊपर की रीडिंग आप देखोगे तो वो सैचुरेशन आपका दिखाएगा और आगे पल्स रेट दिखाएगा. तो ये लिखा हुआ आता है. जब ये आप कर लो तो ऐसे खोल करके आप उंगली निकाल लीजिए. निकाल करके अगर ये किसी और को लगाना है तो इसको आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से अंदर की तरफ भी साफ करिएगा. ये ऐसे खुल के क्रोकोडाइल फेस की तरह खुल के ये अंदर भी जहाँ फिंगर डालते हो वहां पे सैनिटाइज करके आप रख दीजिए. सो इतना ऐसा, आई होप अभी आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड. यस, थैंक यू सो मच. और रेंजेस क्या है, मतलब हेल्थी रेंज क्या है और कहाँ हमें अब सावधानी करना पड़ेगा? सी आइडियली अब आजकल तो रेंज थोड़ी सी ऊपर नीचे करते हैं, बट 95 के ऊपर तो आपको कुछ सोचना भी नहीं है. अगर आप कोमॉर्बिड पेशेंट हो और आप 95 के नीचे जा रहे हो, 93, 94 इस टाइप से जा रहे हो, तब आप अपने डॉक्टर से कॉल करके बात कर लीजिए. बट इफ इट इज डिपिंग बिलो 90 के भी नीचे जा रही है, देन इट इज अ लिटिल अलार्मिंग. रूम एटमोस्फेयर में बिलो 90 यू शुड immediately contact a physician. Otherwise anything 95 के बाद आप जो आप कार्य सेतु ऐप है या जिस भी प्रोफेशनल से आप कनेक्टेड हैं, आप उससे बात कर सकते हैं. वो आपको आपके बाकी के सिम्टम्स एंड इसके लेवल के बारे में पूछेगा, उसको देख लीजिए. बट आप कंसल्ट आफ्टर 95 जरूर कर लीजिए किसी से. थैंक यू. जस्ट अ फ्यू मोर क्वेश्चंस डॉक्टर जयंती. हमें क्या करना चाहिए अगर एक केयर टेकर कोविड सिम्टम्स डिस्प्ले करना शुरू करता है? ओके, सो जैसे आप अगर किसी को देख रहे हो, अटेंडेंट हो आप कहीं पे, तो आप उसकी जब देखभाल कर रहे हो तो
3 से 4 दिन या कभी कभी 5 से 6 दिन में भी आपको बुखार लगने लगता है या आपको लग रहा है कि आपको खांसी आ रही है, आप अपना भी कोविड टेस्ट कराएं। जब आप अपना कोविड टेस्ट कराएंगे, तो अगर वो पॉजिटिव आता है तो आपको एज कोविड पेशेंट ही ट्रीट करेंगे। जितने इंस्ट्रक्शंस कोविड के लिए दिए हैं आपको वो सारे फॉलो करने पड़ेंगे। बट अगर आप भी पॉजिटिव हो गए हैं और आपके घर में कोई और नहीं है जो आप दोनों पहले वाले पेशेंट और आपकी देखभाल कर सकता है, तो उस समय ये बेटर होगा कि आप किसी कोविड केयर फैसिलिटी में चले जाएं। दिस इज नॉट अ हॉस्पिटल कोविड केयर फैसिलिटी, जस्ट आपको खाना पीना इस सब का देखभाल एक जगह हो सकती है क्योंकि आपके पास कोई और है नहीं आपका ये देखने के लिए। सो केयर गिवर को 3 से 4 दिन में या कभी कभी 5 से 6 दिन में सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। आप टेस्ट कराइए। अगर कोई और सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो सिंपल कोविड केयर फैसिलिटी में आप जा सकते हो, ताकि आपका डेली रूटीन का काम, खाना पीना, आपको घर की सफाई, ये सब नहीं करनी पड़ेगी। वहां पे आपको टाइम की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। ग्रेट, थैंक यू। और अगर हमारे मतलब पूरे परिवार में फॉर एग्जांपल केयरटेकर ही है और वो भी सिम्टम्स डिस्प्ले कर रहे हैं और पूरा परिवार पॉजिटिव है, तो फिर आइसोलेशन प्रोसेस का क्या होगा? ओके, से सपोजिंग आपके घर में 4 लोग हैं और चारों पॉजिटिव हैं बट डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में हैं, और उसमें कोई पेशेंट, कोई पर्सन ऐसा भी है जो हाई रिस्क कैटेगरी का पेशेंट है, तो उसकी तो उस पेशेंट की जो हाई रिस्क कैटेगरी का पेशेंट है उसकी तो आपको स्पेशल केयर करनी ही पड़ेगी विद इन कंसल्टेशन विद अ मेडिकल ऑफिसर। बट इफ द इंटायर हाउस होल्ड इज पॉजिटिव एंड फिजिकली दे आर नॉट दैट सिक, सैचुरेशन ठीक है, बुखार नहीं है, खांसी उतनी है जो घर में मैनेज हो सकती है, थोड़ा बहुत गला खराब है तो बट खुद से गागल्स कर सकते हैं, एंड बेसिक खाना घर में खुद बना सकते हैं, सो देन दे कैन कंटिन्यू स्टेइंग इन द हाउस। पर उस समय अलाउड नहीं होता कोई भी डोमेस्टिक हेल्प या कोई भी बाहर से आने का। इस बात का माइंडफुल रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा गया है एंड एडवाइस भी ये करते हैं कि जैसे आपके नेबर्स हैं, अब पूरा घर कोविड पॉजिटिव हो गया है, बहुत सीरियस नहीं है, वेरी माइल्ड सिम्टम्स, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो जनरली आप रिक्वेस्ट कर सकते हो किसी से कि आपका घर के लिए खाना स्पेशली कोई बना के बाहर रख जाए, ताकि आपकी न्यूट्रिशन पूरी होती रहे। घर में आप अपना रेस्ट ले सकते हो अपने नोन एनवायरनमेंट में। विद इन द हाउस आप सैनिटेशन मेंटेन कर सकते हो बाय रेगुलर क्लीनिंग एंड हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से, तो आप घर में रहो। बट कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट आपको उस समय लेने की जरूरत पड़ सकती है, सो रीच आउट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, ग्रेट, थैंक यू डॉक्टर जयंती। तो सिम्टम्स पे निर्भर है, आप कह रही हैं अगर एक्सट्रीम सिम्टम्स, आई थिंक विल स्विच, हम स्विच कर रहे हैं? नहीं, ओके। तो सिम्टम्स पे निर्भर है, अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो पूरी फैमिली खुद अपना देखभाल कर सकती हैं, कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, बस बाहर ना जाएं और किसी को आने के लिए ना बोले। अगर एक्सट्रीम सिम्टम्स है या फिर कोई एक सदस्य है जिसका कोमॉर्बिड कंडीशन है या मतलब एक्सट्रीम हेल्थ कंडीशन है, डायबिटीज है, अगर इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे है, ऐसा कुछ है, तो वो उनके लिए कंसल्ट करें, उनको अलग रखें, यू आर सजेस्टिंग ना? आई एम सजेस्टिंग कि उनको अलग रखें, बट अगर उनके कंसल्टिंग फिजिशियंस उनको बोलते हैं कि आप हॉस्पिटल में मूव कर दीजिए, तो आप कर दीजिएगा। ठीक, या सो एसेंशियली यही है। और अगर हो सके थोड़ा मदद लीजिए खाने के लिए, ताकि आपका न्यूट्रिशन पूरा हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब कोविड से आप गुजर रहे हैं, मतलब आप अपना आइसोलेशन कर रहे हैं। Yes. लास्ट 2 क्वेश्चंस डॉक्टर जयंती। हम कैसे अपने यूटेंसिल्स, अपने बर्तन डिसइंफेक्ट कर सकते हैं कोविड के दौरान? ओके, सो बर्तन अगर पेशेंट ठीक है होम आइसोलेशन में, तो वो अपना बर्तन खुद धो सकता है। नॉर्मल जो
जिस डिटर्जेंट से हम धोते थे, विम, व्हाटएवर जो हम यूज कर रहे हैं, उससे हम धो सकते हैं अगर हम अपने कमरे में खुद कर रहे हैं। बट सपोजिंग हम अपना बर्तन नहीं धो रहे, हम खाना खाने के बाद बर्तन बाहर रख रहे हैं, तो जो जो केयर गिवर है उसको ग्लव्स पहन के बर्तन उठाने चाहिए, उसके बर्तन अलग धोएं, अलग अलग स्क्रब और विम से, ताकि वो सेम बाकी बर्तनों को ना हो। उसको धो करके आप सूखने के लिए रख दीजिए अलग। उसके बाद आप अपना ग्लव्स डिस्पोज करिए, ग्लव्स डिस्पोज करके हाथ धोइए 40 सेकेंड्स एंड बाकी का काम करिए। वो बर्तन बाद में आप रीयूज कर सकते हो। सो अगर आप खुद से साफ कर रहे हो पेशेंट, तो वो अपना अंदर कर सकता है और उसको रीयूज कर सकता है। अगर केयर गिवर कर रहा है तो उसको ग्लव्स पहन के उठाना चाहिए, अलग विम एंड स्क्रब यूज करें, धो करके उनको अलग रखें सूखने के लिए। जब उसको रख दे वो बर्तन, अपना ग्लव्स उतारें, डिस्पोज करें एंड हाथ धो करके बाकी का काम करें। ग्रेट, थैंक यू। और कितना समय, मतलब ड्राई करके हम इमीडिएटली यूज कर सकते हैं एकदम से जब वो बर्तन ड्राई हो जाए? हाँ, हम यूज कर सकते हैं इमीडिएटली, बट हम ये एडवाइस ज्यादा नहीं करेंगे कि आप कपड़े से उसको पोंछ के करें, बिकॉज हो सकता है थोड़ा बहुत वायरस रह जाए तो वो कपड़े में आकर के दूसरी जगह फैल सकता है। अपने आप उसको ड्राई करने दीजिए, नहीं तो अगर आप पेपर टॉवल यूज करके ड्राई कर सकते हैं तो आप उससे ड्राई कर लीजिए, और पेपर टॉवल को क्लोज्ड बिन में डाल करके हाथ धो करके फिर आगे काम करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देयर इज वन क्वेश्चन। हमारी ऑक्सीमीटर रीडिंग 77 के आसपास है, पर हमारे बॉडी के अंदर कोई परेशानी नहीं है। ये कोई परेशानी की बात है क्या? जिनको 77 है, क्या वो कोविड पॉजिटिव है? um, जिन्होंने ये सवाल पूछा था, अगर आपका कोविड पॉजिटिव रिजल्ट हुआ है, आप बता सकते हैं प्लीज? इफ नॉट, इज अगर नहीं है तो परेशानी की बात है? 77 आइडियली नहीं होता लोगों को, नॉर्मल लोगों को। जिनको थोड़ी रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती हैं, लाइक COPD वगैरह, उनका वैसे ही कम रहता है, बट इट होवर्स अराउंड 94 95 ऐसे करके, 96 ऐसे होवर करता है। कभी कभी स्मोकर्स का भी कम होता है, बट 77 नहीं हो सकता। 77 होने के लिए या तो आपने ऑक्सीमीटर गलत लगाया होगा, या मे बी आप फिंगर बहुत मोड़ करके रख रहे हैं, या अभी आप बहुत ठंडे पानी से हाथ आपने धोया होगा तो वासोकंस्ट्रिक्शंस हो रहे होंगे, या मे बी आपका मे बी बिकॉज ऑफ लो सेल्फ ज्यादा वीक हो गई हो, तो रीडिंग्स एरर आएगी। बट 77 अगर आपका आ रहा है और आप कोविड पॉजिटिव हो, तो आपको थोड़ा आपको कंसर्न होना पड़ेगा। नॉर्मली लोगों को 77 नहीं होता। ओके, तो और कोविड पॉजिटिव हैं तो आप कह रहे हैं फिजिशियन या यस, किसी हेल्पलाइन को कॉल करें? यस, इमीडिएटली 77 में। हाँ, और अगर नहीं है बट स्टिल फिर से एक रीडिंग ले, क्योंकि हो सकता है जैसे आपने कहा आपने गलत मतलब तरीके से मेजर किया है, या फिर आपने हाथ ठंडे पानी से हाथ धोया है वगैरह वगैरह। हाँ, कुछ भी हो सकता है, बट ओके, 77 इज नॉट अ नॉर्मल रीडिंग। ठीक है। ये सुमंत कुमार ने पूछा था, वो कोविड पॉजिटिव नहीं है, तो एक और बार चेक करिए। हाँ, ये काफी अनयूजुअल रीडिंग है। यस। जस्ट आई थिंक वन लास्ट क्वेश्चन और हम क्लोज कर देंगे। अगर मैं अकेले हूँ और कोविड पॉजिटिव हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर आप अकेले हैं और आपको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, जो हम लोग ने पहले डिस्कस किया था, BP, डायबिटीज, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अस्थमा, कोई भी कोमॉर्बिडिटी नहीं है, आप एल्डरली पेशेंट नहीं हैं, आप किसी कैंसर सर्वाइवर या कीमोथेरेपी पे, या आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कुछ आपका नहीं हुआ है, तो आप अगर कंफर्टेबल हैं और एंशियस नहीं हैं, आपको टेम्परेचर नहीं है, आप खुद से उठ के अपना खाना खा सकते हो, दैट मीन्स आप टोटल एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो आप घर पे रह सकते हैं। आप अपनी 6 आवरली मॉनिटरिंग करिएगा। बट अगर आपको एंशियसनेस लग रही है, आप किसी काउंसलर से बात कर सकते हो हेल्पलाइन में। अगर फिर भी आपको ठीक नहीं लग रहा,
तो आप कोविड केयर सेंटर जा सकते हो, बट आप अपनी कोमॉर्बिडिटीज के साथ या मेंटल हेल्थ मेंटली नॉट फीलिंग ग्रेट, तो आप किसी को जरूर कंसल्ट करें. Great. Thank you. Thank you very much, Dr. Jayanti, and thank you so much to Preeti and Dr. Renuka. आपने हमारे साथ कोविड की होम मैनेजमेंट के डाउट्स क्लियर किए और इतना इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किया. And thank you to everyone who joined to clarify your queries and participated. For more information on home management, you can refer to the resources that we have shared, as well as go to www.prachicp.com/youngwarriors. ये लिंक हम chat comment section में भी डाल देंगे. हमारा movement join करने के लिए please YWA टाइप करिए और सेंड करिए +919650414141 पे, या फिर एक मिस्ड कॉल दीजिए 08066019225 पे. Thank you again for joining, and thank you to Dr. Jayanti, Preeti, and Dr. Renuka. We are also going to be having some more sessions, so do join us again Saturday at 5 p.m. for a safe space session on self-care for volunteers, which will be facilitated by the Hank Nunn Institute, as well as next Wednesday, same time at 3 p.m. for a COVID Academy session on how to volunteer during the pandemic. हम इस समय एक युवक volunteer कैसे बन सकते हैं, और ये UNB के साथ partnership में होगा. Thank you again, and stay safe, everyone.